Force on the current carrying loop. Current carrying loop plays in magnetic field PQRS, rectangular loop. PQ पे force 0, RS पे force 0 because parallel anti-parallel. SP पे into the plane, QR पे out of the plane. As a result, it starts rotating, and because of that rotation, the perpendicular distance will also change. Like ये तो t is equal to 0 पे है when the force started acting at time t. S पे force नीचे की तरफ लगेगा F और R पे force ऊपर की तरफ लगेगा F. As the distance between them will change. What's the distance? The perpendicular distance between the forces will change. Now it will not remain same as B. Always angle is measured with respect to the dipole moment and magnetic field. Dipole moment ये clockwise current है अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ है, नीचे से देखोगे तो dipole moment will be perpendicularly like this. This is the dipole moment vector. Because of rotation, dipole moment vector will also rotate. Magnetic field के साथ dipole moment का angle है theta. Magnetic field is So can you explain again why the distance will change with angle? yeah. So consider this as a rectangular loop present like this. Net force is 0 on the top and the bottom. इस पे अंदर की तरफ on the right side. So initial position is this, and we are seeing the side view. तो हम साइड से देखेंगे S and R, बीच की distance है B. It is kept in a magnetic field, and magnetic field is also horizontal magnetic field. Horizontal magnetic field in the direction of now in this magnetic field, the dipole moment has rotated, the vector loop has rotated. ये पहले it was like this, and now it has rotated because of the torque. It like this, and it started rotating. So because of that rotation, दोनों forces जो upward और downward forces थे, उनके बीच की perpendicular distance has changed. This perpendicular distance, magnetic dipole moment and magnetic field, बीच का एंगल लेते हैं थीटा. ये समझ में आ गया डायपोल मोमेंट क्यों रोटेट हो गया? बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज. ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, इसका डायपोल मोमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा बाय एन एंगल थीटा. बिकॉज ऑफ विच ये थीटा 90 माइनस थीटा 90, दिस इज थीटा. The perpendicular distance between the forces will be b sin theta. Will be b sin theta. So force acting, torque acting between the forces due to this forces is force into perpendicular distance. Perpendicular distance is b sin theta. Are now understood diagram? Yes, I got it. Torque is force into perpendicular distance. These two forces are initially acting like this. Now it has started rotating, but force is still vertically up and vertically down. Due to which b is the side length, but the perpendicular length between the forces become b sin theta, and as a result, the torque becomes force into perpendicular distance. F is BIL B times sin. L into B is length into breadth, that becomes area. So BIA sin theta, and I into A becomes magnetic dipole moment. The torque acting on any magnetic moment or any closed loop kept in a magnetic field is defined as mb sin theta. If it is one single turn loop, अगर इसमें n number of turns होंगे, then each turn will have the same torque. So it will be added and it will become NIAB sin theta, where n is the number of turns. NIA becomes magnetic dipole moment. So MB sin theta is the total torque acting on a dipole kept in external magnetic field. Magnetic field में external magnetic dipole को रखने पे it experiences a torque, and that torque is given as MB sin theta, which is quite similar to the electric field, electric torque on the electric dipole in external electric field.
given as PE sin theta. उसमें dipole moment electric था, so that was P. The electric field, that was E, and theta is the angle between the two. Every loop or closed loop present in a magnetic field may experience a torque. Why may? Because if theta is 0 and theta is 180, in those two cases, again, there won't be any torque, there won't be any force as well. In vector form, AB sin theta को लिख लेते हैं A cross B. So similarly in vector form, torque on the loop is defined as M cross B. M cross B is again similar to P cross E, P sin theta or P cross E. Right? So formulas are exactly similar to that of electric dipole in electric field, magnetic dipole in external magnetic field. Very nice. So torque is mv sin theta and theta 0 पर equilibrium होगा जहाँ पे force भी 0 है और torque भी 0 है. Theta 180 is also another position of equilibrium where so theta 0 का मतलब क्या हुआ? Magnetic dipole moment has to be parallel. Magnetic dipole moment parallel का मतलब हो गया plane is perpendicular. If plane is perpendicular, dipole moment will be parallel. Dipole moment will be parallel to magnetic field. Theta 0 पे force 0 and torque 0, which represent a stable equilibrium position. अगर थोड़ा सा इसको rotate करके छोड़ देंगे, it will come back to the original position, and that's why it is called stable equilibrium position. Theta is equal to 180 degree. Sin 180 is also 0. Theta 180 when the dipole moment is anti-parallel to the magnetic field direction. Then also force is 0 and torque is 0. Then also force is 0 and torque is 0. And but here it will be unstable equilibrium. Unstable equilibrium means even when we disturb, it comes back to the same original position. Unstable equilibrium position. Right? Got it? जब स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते थे इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल दैट स्टार्ट परफॉर्मिंग एसएचएम. व्हाई? बिकॉज इट विल बी रिस्टोरिंग. थोड़ा सा ट्विस्ट करोगे इट स्टार्ट कमिंग बैक एंड इट विल बी ऑसिलेटिंग अबाउट द मीन पोजीशन. और उस मीन पोजीशन उस एसएचएम का हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है. सो नेक्स्ट इज एंगुलर एसएचएम ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. एंगुलर एसएचएम ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल. Electric dipole in external electric field start performing SHM when it is displaced from the stable equilibrium position. Similar thing happens for a magnetic dipole also. A magnetic dipole kept in external magnetic field. If it is already in a stable equilibrium position, theta is equal to 0 degree. Give a small displacement theta at start. It experiences a restoring torque. तो आपको अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के फॉर्मूले याद है, इट इज एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला. ई की जगह पे बी लिखना है और पी की जगह पे एम लिखना है. दैट्स इट. एंगुलर सिस्टम ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल. थीटा इज इक्वल टू 0 पे 40 टॉर्क 0
So you're on mute. For small theta, tau को alpha लिख लेते हैं, sin theta को theta लिख लेते हैं. Alpha becomes minus mv by I times theta. Alpha is minus omega square theta. Compare with the standard value. Omega is root of mv by I. Time period of angular SHM is 2 pi root I upon mv. What is I in this formula, Mihir? Is it current? Mihir, torque is equal to I alpha. What is I? Correct. I is? No, sure. Moment of inertia. Torque is I alpha is moment of inertia. वो confusion नहीं रखना. Symbol is same but capital I is moment of inertia. Current के लिए usually we denote small I. Moment of inertia of the loop about the axis of rotation. M is dipole moment and B is external magnetic field. B is external magnetic field. Application of this concept is used in designing galvanometer and ammeter voltmeter. So next हम करेंगे moving coil galvanometer. This formula will be same formula that will be used for magnet. This is also the same formula that will be applicable for a magnet because actual dipole is magnet. This is an equivalent dipole. Its behavior is similar to that of a dipole. All these formulas will also be applicable for a magnet or for a magnetic dipole. For a magnetic dipole, यानी magnet को external field में रख के थोड़ा सा twist कर दो, it start oscillating like a magnetic needle or compass does, and that oscillation will also be given by the same formula. केवल difference दोनों में क्या है? इसमें जो capital M है, this is the dipole moment of closed loop given as N into I into A, और magnet के लिए magnetic dipole will be given as charge or pole strength multiplied by distance. Based on this principle that when a current is passed in a closed loop, it experiences a torque, and due to that torque, the coil kept in an external magnetic field start rotating. This principle is used in designing a galvanometer. Moving coil galvanometer, it is a device which is used to detect the presence of current. Moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer. It is a device used to detect the presence of current. It is a device used to detect the presence of current or to detect the change in direction of current or to detect the change in direction of current. It is a device used to detect the presence of current or detect the change in the direction of current. क्योंकि अब theory में आना नहीं है, so don't worry, you don't need to write much theory, but please understand the concept because बहुत सारे conceptual question होते हैं. So we use two convex poles of a magnet. Bar magnet के
पोल्स को कन्वेक्स शेप में चेंज कर लेते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कन्वेक्स पोल्स में करने का क्या एडवांटेज होता है, दैट फील्ड बिकम स्ट्रॉन्गर, magnetic field lines become quite more concentrated, highly concentrated, which gives a very strong magnetic field। ठीक है, बट वो हम बाद में डायग्राम समझेंगे, अभी सिर्फ समझने के लिए वी आर सीइंग दिस साइड व्यू ऑफ द मूविंग कार गैल्वेनोमीटर। Inside this magnetic field, a coil is placed. Inside this magnetic field, a coil is placed. Having n number of turns, which is attached to the outside terminal। इसमें पॉसिबिलिटी ऐसा कुछ होता नहीं, इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट लेफ्ट साइड में हाई, राइट साइड में लो। कैलोमीटर में हम किसी भी डायरेक्शन से करंट कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज शोइंग जीरो इन द मिडल। मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल, Still muted. स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग इज अटैच्ड टू अ पॉइंटर एंड दैट पॉइंटर इज फ्री टू रोटेट ऑन अ सर्कुलर स्केल। तो ये सिंपल सा से समझने के डायग्राम है, एक्चुअल में थोड़ा सा मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल रखी हुई है, कॉइल में जब हम करंट पास करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट करंट इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क।
और उस टॉर्क की वजह से दिस कॉइल स्टार्ट रोटेटिंग, कॉइल रोटेट होगी, उसके साथ स्प्रिंग रोटेट होगी। स्प्रिंग के एक एंड को अगर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, एक को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, दूसरा एंड अपने आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई पॉइंटर गेट्स स्लाइटली डिफ्लेक्टेड। सो प्रिंसिपल क्या है, करंट कैरिंग कॉइल और करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। इस लूप में जैसे करंट पास होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, टॉर्क की वजह से ये रोटेट होने लग जाता है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। स्प्रिंग के एक एंड को ट्विस्ट करोगे तो दूसरे एंड में अपोजिट रीस्टोरिंग टॉर्क अपने आप जनरेट हो जाएगा, और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे देन द पॉइंटर विल कम इन रेस्ट, पॉइंटर विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। व्हेन नो करंट इज पास पॉइंटर वाज शोइंग 0 बिकॉज ऑफ करंट, टॉर्क लगेगा, टॉर्क की वजह से कॉइल रोटेट होगा, कॉइल की वजह से स्प्रिंग रोटेट होगी, और स्प्रिंग से वो पॉइंटर अटैच है, देन दैट पॉइंटर विल आल्सो डिफ्लेक्ट इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट की डायरेक्शन को हम चेंज कर देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज की जगह पे क्लॉकवाइज ट्विस्ट होने लग जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली हम उस करंट की डायरेक्शन और करंट के सेंस को मेजर कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। मेजरमेंट तो करते नहीं है गैल्वेमीटर से। The galvanometer is a device used to detect the presence of current or sense the change in direction of current, and this works on the principle that a current carrying coil or current carrying loop placed in external magnetic field experiences a torque. Current carrying loop experiences a torque when kept in external field. ये हो गया इसका प्रिंसिपल। अब फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें जो रेडियल पार्ट है इसका मतलब क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी नहीं। द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, जो रेडियली आउटवर्ड निकलेगी नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे रेडियली अंदर की तरफ जाएगी, बीच में हाईली कंसेंट्रेटेड। दिस विल बी द शेप ऑफ राइट, ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। और ये जो लूप हम देख रहे थे, दिस लूप इज एक्चुअली प्लेस्ड परपेंडिकुलर, दिस लूप इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू व्हाट, इस प्लेन पे नहीं है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। यानी अगर हम टॉप से देखेंगे तो हमें केवल ये ऐसे कुछ साइड में दिखेगा। दिस इज द टॉप व्यू, टॉप व्यू बॉटम व्यू Can कुछ you भी समझो। explain how the loop is placed? हाँ बेटा, So can you explain how the loop is placed? दिस प्लेस लाइक दिस, जो हम देख रहे थे उसका साइड व्यू है। इट्स नॉट प्लेस लाइक दिस, दिस इज ओनली फॉर द रिप्रेजेंटेशन पर्पस। द लूप इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली लाइक दिस, Okay. बट इट Yes. स्प्रिंग जो लगी हुई है वैसे बाहर लगी हुई है, दैट इज स्प्रिंग। एडवांटेज ऑफ दैट इज दिस लूप इज स्मॉल इन साइज, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे होते हैं। एवरी टाइम इट विल बी इन अलाइनमेंट विद सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होता है ड्यूरिंग दिस होल रोटेशन। जब तक ये रोटेट होगा, ट्विस्ट होगा, द थीटा इज 90 डिग्री फॉर ऑल द टॉर्क, फॉर ऑल द लूप्स, ऑल द पोजीशन। तो दो एडवांटेज जो है, पहला क्या, मैग्नेटिक फील्ड बीच में बहुत हाई हो गया बिकॉज इट इज वेरी हाईली कंसेंट्रेटेड, एंड व्हेन इट इज ट्विस्टेड in every position it is always perpendicular, magnetic dipole moment is always perpendicular। ऐसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं because these are the hot favorite questions for Vaibhav, why there is a radial magnetic field, why the convex poles are used, right? So theta 90 होगा हमेशा, नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से टॉर्क लगेगा, मैग्नेटिक टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, torque due to magnetic field, it will be NIAB sin theta, and theta is 90 degree. Suppose it is clockwise, because of the magnetic field torque, the spring attached also start twisting, और इसकी वजह से दूसरे एंड पे अपोजिट टॉर्क आ जाएगा, and that is called restoring torque. So this magnetic field torque on the coil is NIAB,
torque, restoring torque developed in the spring. Restoring torque developed in spring will be K times theta. Is equal to K theta, where K is called torsional constant. फोर्स के लिए इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट और टॉर्क के लिए इसको बोलते हैं torsional constant, which depends upon the shear modulus and all. This torsional constant of spring. High torsion, right? जैसे जो हॉर्स के हेयर होते हैं, हॉर्स की टेल में जो हेयर होते हैं, that was used first time. हॉर्स हेयर, उसके टॉर्सन बहुत ज्यादा होती है, वो ट्विस्ट होके भी टूटते नहीं है. Like that, so there is a high torsion spring. जब स्प्रिंग के अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सटर्नल टॉर्क को बैलेंस कर लेगा. दैट विल बी द इक्विलिब्रियम पोजीशन. इन इक्विलिब्रियम द टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज बैलेंस्ड बाय द स्प्रिंग रीस्टोरिंग टॉर्क. NIAB is equal to K times theta. Theta is equal to NAB divided by K times I. Means the deflection of the pointer is directly proportional to current passing through it. And that is how we can use this deflection to detect the current magnitude wise as well as direction wise. More current, more deflection, and if the current is in opposite direction, there will be opposite deflection. So that is the principle of moving coil galvanometer. Galvanometer में बहुत सारे number of turns use करते हैं so that even a small current will produce sufficiently large torque which will be able to rotate this coil. ठीक है, n is number of turns, A is area, B is magnetic field, and I is current. And because of this deflection, the galvanometer can be used to detect the presence. Why it cannot be used to measure the current? उसका reason है बहुत सारे number of turns. Because of a large number of turns, इसकी length बहुत ज्यादा होगी, length ज्यादा होगी तो resistance बहुत ज्यादा होगी, और such a high resistance cannot be used to measure the current, क्योंकि current measure करने के लिए हमें सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है. सीरीज में अगर हमने बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा दिया तो सर्किट की ओवरऑल करंट चेंज हो जाएगी. इट विल नॉट गिव द रीडिंग ऑफ एक्चुअल करंट. अंडरस्टूड द प्रिंसिपल. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को, गैल्वेनोमीटर इज नथिंग बट अ रेक्टेंगुलर कॉइल kept in external magnetic field which is always perpendicular. और ये हमने कैसे इंश्योर किया that it will always be perpendicular? By using the radial magnetic field and a very strongly concentrated. At the center there is a very strong concentrated magnetic field region, so magnetic field is very high and the plane of the coil will always lie in the magnetic field line itself. दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे. दिस थीटा विल बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द करंट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ. बट हम इस डिवाइस को यूज नहीं करते करंट को मेजर करने के लिए, एंड द रीजन इज बिकॉज ऑफ सच अ हाई रेजिस्टेंस इट डिक्रीजेस द ओवरऑल करंट ड्रास्टिकली. ये तो गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल हो गया. थीटा या फिर आई को लिख लेते हैं K डिवाइडेड बाय NAB इंटू थीटा इज द सेम थिंग. करंट इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू करंट. इन एनी गैल्वेनोमीटर टू थिंग्स आर फिक्स. क्या हमने कितने टर्न्स यूज किए, अकॉर्डिंगली देयर विल बी अ गैल्वेनोमीटर कॉइल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय RG. Galvanometer coil resistance, and another is the deflection. Another is the deflection है, ये maximum कितना हो सकता है, that is also fixed. This is called full scale deflection current, which will give the pointer to full scale deflection, and which is usually very less, very small. ये बहुत ज्यादा नहीं हो सकती because if it is very high, pointer पे टॉर्क ज्यादा लगेगा, pointer इस टॉप से टूट जाएगा कोलाइड करके, और there will be a large amount of heat produced which will burn the coil. गैल्वेनोमीटर में जो मैक्सिमम करंट पास हो सकती है IG, that is full deflection current. Either it will be directly given or it will be given how many number of turns are there and what is the current per unit turn, like per unit division.
एक डिवीजन है 1 मिली एम्पियर. If there are 30 divisions, the total full scale deflection current will be 30 milli ampere. Current sensitivity is defined as deflection per unit current. Current sensitivity SI will be theta by I. Deflection per unit current यानी कम current में अगर ज्यादा deflection होता है, then we call it as sensitive device. Theta by I is N A P by K. तो करंट सेंसिटिविटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न. जब हम इसको वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज करेंगे, व्हिच वी विल सी नेक्स्ट क्लास, टुडे टाइम इज आई थिंक ऑलमोस्ट ओवर. किसी भी गैल्वेनोमीटर को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं. वी कैन कन्वर्ट इट इनटू गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, और वी कैन कन्वर्ट इट इनटू वोल्टमीटर. जब एमीटर के लिए यूज कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी. डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी. यानी कम वोल्टेज में अगर ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो ज्यादा ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, वो स्मॉल वैल्यूज को भी इजिली मेजर कर पाता है. थीटा बाय आई इज करंट सेंसिटिविटी, सो करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय आर, या फिर करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू पुट कर दोगे तो एन ए बी डिवाइडेड बाय के टाइम्स आर. नाउ वोल्टेज सेंसिटिविटी में भी वैसे तो ऊपर एन दिख रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स, बट this will not be directly proportional to number of turns. Reason being, this is not directly proportional to number of turns. Reason being, अगर हमें number of turns बढ़ाए तो length बढ़ेगी, length बढ़ेगी तो resistance भी same ratio में बढ़ जाएगा. अगर number of turns double करेंगे, length double होगी, resistance will also become double, and therefore denominator and numerator get cancelled out. Voltage sensitivity cannot be increased by increasing the number of turns. वर्किंग प्रिंसिपल क्लियर. करंट कैरिंग लूप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर टॉर्क लगता है. टॉर्क से वो रोटेट होगा, और उसके साथ स्प्रिंग लगी हुई है, वो रोटेट होगी, वो रिस्टोरिंग टॉर्क. So I'm still confused about the loop. हाँ बेटा, I'm still confused about the loop's position. like this. ये कौन सा view? Are we looking at it from the top or from the side? This is for the side view. Okay. This is the top view. This loop is going inside. Voltage sensitivity cannot be increased by increasing number of turns, because में नीचे भी resistance बढ़ जाएगा with the same amount. Okay, we'll continue next class. Tomorrow there is no class on occasion of Muharram. Tomorrow's class won't be possible. We'll have next class in Tuesday, and your test on Saturday will be as usual. So what topic is coming on Saturday? I don't know. The planner must have been shared in the very first week. Check the planner. I don't know it's chemistry or math. Right. I think it is supposed to be math. Thank you. Thank you, sir.